Okay guys, so in this video, I'm going to do two things, okay? First, I'm going to show you guys a trade breakdown. Okay, I'll do trade breakdown on Euro USD and GP USD this week, what setup was there, okay? So you guys can see the trade breakdowns from my side as every every week in the weekend, I'm going to try to share द ट्रेड विथ यू गाइस ओके कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं था ओके वेयर आई एंटर्ड वेयर आई एग्जिटेड एवरीथिंग ओके एंड वन थिंग आई वांट टू गिव you guys in this video that's what we call a demon finder and this is I took from Tom Dante okay he is a legend you guys should go and follow him on YouTube as well okay so what is demon finder basically okay now I can see a few of you basically struggling in psychology wise basically okay they was set up but I missed and it's going to happen with everyone okay I'm not saying to any specific person it's going to happen with everyone in your early stage okay and of course in future also once you become little consistent as well it's going to happen okay that's how our human mindset human psychology work basically you're going to feel sometime you missed the trade, there was a setup but you didn't took, etc. etc. Now I believe basically journal is very important. Okay, let's say weekend हुआ and buy one diary, do the journal. Okay, कि is there was any setup or not this week? If yes, where the setup was, okay, what was the higher time frame? What entry confirmation was there? What is that entry time frame? Basically entry confirmation जो था entry कौन सा टाइम फ्रेम में मिल रहा था so do this ताकि आप अपने आप को ट्रेन कर पाओ for future okay also we every week you're going to do bunch of mistake okay sometime you will basically exit too late, you will sometime enter too late. Okay, so it's going to happen. Okay, and that's what is Demon Finder basically for us. Okay, I already said this in a free group a long time ago basically. Okay, but I'm going to show you guys today as well. So first of all, this is he's the guy Trader Dante. I already shared his link on our Discord group as well, and I'll highly suggest you guys to go and watch his video. Okay, YouTube video. If you struggle, see, once you understand technical analysis, you're going to struggle in psychology wise. Okay, should I enter? Should I not? Should I take profit? Should I not? So you're going to face so many problems psychology wise okay and you should always train your mind basically okay and you should always aware कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो या फिर क्या मिस कर रहे हो ताकि वो जर्नल करो आप ओके और जर्नल से ही आपको समझ में आएगा कि यस आई एम दिस पार्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल सम ऑफ यू मे बी जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो हमेशा कभी साइज बड़ा कर लेते हो मतलब आप कभी ज्यादा लॉट का ट्रेड ले रहे हो कभी कम लॉट का ले रहे हो कभी 1% रिस्क ले रहे हो 0.5% रिस्क ले रहे हो सो हाउ यू विल नो इफ यू जर्नल ओके इफ यू सी एवरी वीक यू डूइंग सेम मिस्टेक या फिर एवरी वीक यू बेसिकली आप प्लान किए हो ट्रेड ओके आप प्लान किए हो कि ये ट्रेड मैं लूंगा और जब ट्रेड सेटअप फॉर्म हो रहा आप फियर के कारण ले ही नहीं रहे हो ओके so it's going to happen maybe it's happening with some of you okay and that's why we have to watch videos on trading psychology so we can basically understand how our mind works how we can improve ourselves okay so I highly recommend you guys go and watch his video you can start from here basically from this all video okay ये ऊपर का 4 और ये 3 video you can watch all his video but of course you should watch his all video okay so let me show you Demon Finder. So this is Demon Finder basically. Okay, you can take the screenshot, you can print it out, or you can go to your Excel sheet and you can type this same thing on your Excel basically. Okay, अगर आप print out नहीं करवाना चाहते हो तो ठीक है. So you can see here basically some of the demon we have here. Okay कि कभी होता है कि हम लोग कभी काफी लेट से एंट्री लेते हैं ओके कभी जल्दी एग्जिट कर देते हैं जो टीपी है उससे पहले एग्जिट कर देते हैं ओके
बहुत जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, कभी बहुत जल्दी एंटर कर लेते हैं, ट्रेड सेटअप फॉर्म हुआ नहीं है बट एंट्री ले लिए हैं। ओके, और जो ट्रेड प्लान में नहीं है फॉर एग्जांपल वो ले लिया। यू कैन ऑल्सो ऐड, आपको लगता है कि आप कुछ स्पेसिफिक चीज में आपका वो डिमन है बेसिकली, आप हमेशा वो मिस्टेक कर रहे हो, तो आप वहां पे अपना यहाँ पे लिख लेना एक्सेल सीट बना के, ठीक है। एंड लेट से आप पहला दिन पहला ट्रेड लिए, सोच सकता है पहला ट्रेड में आपका मिस्टेक था जो इंटर टू लेट, ओके, तो आप इसमें टिक करोगे। सेकेंड ट्रेड आप जो लिए होगे, लेट से इट वाज एग्जिटेड टू सून, तो आप उसमें टिक करो। बाय 9-10 ट्रेड्स यू विल सी कि ये सब डीमन में, ओके, ये सब डीमन जो जितने सारे डीमंस है, ओके, इसमें से किस में आप सबसे ज्यादा बेसिकली सेम चीज रिपीट कर रहे हो, क्योंकि आप उसमें टिक करते जाओगे, राइट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल एग्जिटेड टू सून, ओके, आप बहुत जल्दी एग्जिट कर देते हो टीपी से पहले, या फिर मार्केट हल्का सा आपका स्टॉप लॉस के साइड जा रहा है, आप एग्जिट कर दे रहे हो डर से कि ये तो पूरा स्टॉप लॉस ही जाने वाला है। तो विथ इनफ डेटा, लेट्स से 10 ट्रेड या 9 ट्रेड के बाद, लेट्स से इसमें एग्जिटेड टू सून में लेट्स से 7 टाइम्स इसी में टिक है या 5 टाइम इसी में टिक है, तो यू नो कि दिस इज योर बिग डेमन, ओके, एंड यू हैव टू इम्प्रूव, राइट। सो अब इस पे फोकस करोगे। देखो, ट्रेडिंग इज लाइक बेसिकली एथलीट गेम, ओके, स्पोर्ट्स जैसा होता है। आपको मतलब पता है, अगर आपको पता है कि आपका वीकनेस क्या है, फॉर एग्जांपल लेट्स से क्रिकेट का बात करते हैं। अगर आपको पता है कि आप मतलब लेट्स से बाउंसर नहीं खेल पाते हो फॉर एग्जांपल, ओके, आप बाउंसर नहीं खेल पाते, तो आप क्या चीज़ से प्रैक्टिस करोगे, बाउंसर पे, राइट, ताकि आपको मतलब अपोनेंट बाउंसर दे के आउट ना करे या फिर डिस्टर्ब ना करे। सो कैसे पता चलेगा कि यार मेरे को बाउंसर से प्रॉब्लम है विद दिस डिमन फाइंडर, ओके। जब आप टिक करोगे, अब जब काफी ट्रेड लेते रहोगे, ओके, एंड वट एवर मिस्टेक यू डू, लेट्स से इन सम यू डिडंट टेक प्लान ट्रेड, अब उसमें टिक करो कि यार मैं जो ट्रेड प्लान कर रहा हूँ मैं उस वो ले ही नहीं रहा हूँ। फॉर एग्जांपल किसी के लिए हो सकता है कि सबसे ज्यादा टिक डिडंट टेक प्लान ट्रेड में हो, ओके, 5-6 टिक इसमें हो, क्योंकि आप जो भी ट्रेड प्लान कर रहे हो आप वो ले नहीं रहे हो, तो उस पर टिक करो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि यार यस दिस इज माय मिस्टेक एंड आई हैव टू इम्प्रूव, आई हैव टू टेक ट्रेड बेसिकली व्हाट आई एम प्लानिंग, ओके। सो दैट विल हेल्प यू टू नो कि क्या आपका सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं अपना एक्सेल बना के रखा हूँ, ओके, यू कैन सी। सो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ अपना ऐड भी कर लिया जो मेरे को लगता है कि यस इट्स इम्पोर्टेंट। जैसे कभी फियर एग्जिट, कभी एक होता है कि डर से एग्जिट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि मतलब डर लग रहा है कि यार ट्रेड वर्क करेगा नहीं करेगा, तो उसके कारण सो फिर मैं इसमें आके मतलब एक क्रॉस साइन मार देता हूँ। लेट्स सेकेंड डे सेम चीज अगर हुआ तो इसमें, तो ओवर 10 ट्रेड आई विल नो कि ये सब में से, ये सब डीमन में कौन सा सबसे ज्यादा डीमन जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, जो मेरे को कंसिस्टेंट नहीं होने दे रहा है, तो देन आई विल वर्क ऑन दैट थिंग बेसिकली, राइट। सो यू कैन सी सम ऑफ basically I have here, okay, sometime I previously last year I remember बिफोर एवरी न्यूज, ओके, जो भी न्यूज आता था मार्केट में, रेड फोल्डर, आई वॉज डूइंग गैमलिंग जस्ट बिफोर न्यूज, टेकिंग ट्रेड 2 मिनट 3 मिनट बिफोर टेकिंग ट्रेड। सो आई सॉ विद द डेटा कि यार मैं न्यूज गैमलिंग काफी करता हूँ और मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉस बेसिकली हिट ड्यूरिंग दैट टाइम बेसिकली, ओके, सबसे ज्यादा लॉस में उस टाइम लेता हूँ। तो फिर इसमें मैं टिक करते गया, फिर देन आई सॉ कि लास्ट ईयर यस आई वॉज डूइंग न्यूज गैमलिंग, देन ऑफ कोर्स नाउ आई डोंट डू। सो ये सब कैसे कैसे पता चलेगा, जब आपके पास डेटा हो, राइट, आप जर्नल करो, तो दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड दिस अगेन आई विल से कि ये मैंने टॉम डेंटे से लिया है, सो यू कैन फॉलो हिम एज वेल, ओके। So I hope this will help you guys. You can take the screenshot. Of course, you can go to your Excel sheet and you can make your own, and you can print it out as well. Okay. So I hope ये चीज समझ में आ गया है. So now let's come to basically trading view, and let's do a trade breakdown on Euro USD and GP USD. What happened this week? Of course, there are few other pairs, but of course मैं सब pairs तो discuss नहीं कर सकता हूँ. Okay. But I'll show you what setup was there, okay, ताकि आप भी अपने आप को ट्रेन कर पाओ बेसिकली, okay. So let's say यूरो यूएसडी, let's say मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ था मंडे 12 अगस्त, okay, and you can see this, we are right now here, okay. So ठीक है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था। So first of all you can see
हम लोग लेट्स से इसको रिप्ले करते हैं कि मंडे से। सो लेट्स से फ्राइडे को मार्केट जब यहाँ था, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू स्टार्टेड with weekly time frame. On weekly, what you can you see something on weekly time frame? Nothing much, right? Just we are at this high probability order block, right? Weekly order block पे हम लोग हैं. Okay, why this is high priority order block? Because it's coming from the fair value gap, right? So we was at this weekly order block. That's what we know on weekly time frame. Okay, and let's come to daily time frame. Okay, so on daily we can see basically we are inside this daily bullish fair value gap, right? Daily bullish fair value gap. Okay, so we have this daily fair value gap, and this is what external range liquidity. Simple. First step clear. Market internal पे है. We have external liquidity untapped. So what we can look for? Internal to external. So आपका higher time frame clear है, right? Now what you have to wait? You have to wait for displacement. Okay, on 1 hour, 4 hour time frame पे आप जाके आप see now in this basically we have not tapped 50% of this fair value gap. You can see just 20% around we tap this fair value gap. You can look for long if you get any 1 hour, 4 hour confirmation, right? And you can see this is also overlapping part here. Okay, so this makes high priority area. Now we don't need always ki market pura all the way down eye to touch this overlapping part. Then it basically move towards our external range liquidity. Okay, even if you see it tap this fair value gap and अगर let's see यहाँ पे confirmation है 1 hour 4 hour में, you can look for long, nothing wrong with that. Okay, so higher time frame clear है, right? Internal to external, right? So let's come to first 4 hour time frame, then we will go to 1 hour time frame as well. So 4 hour time frame, what you can see on 4 hour, you can see we have this H4 bearish fair value gap. Okay, of course you can directly go to daily to 1 hour, but I like to come to 4 hour as well. I already discussed why. So let's you can see 4 hour fair value gap है, bearish fair value gap है. Let's say न्यू वीक ओपन है भाई, फ्राइडे को क्लोज हुआ है मार्केट यहाँ पे, ठीक है. So let's come to 1 hour. So 1 hour maybe also you can see we was at this fair value gap. It's overlapped by the way on 1 hour. Okay, it created inverted fair value gap on 1 hour time frame, right? You can see, ठीक है. But we don't have any 1 hour bullish fair value gap for the entry, right? You can see we have basically Friday here we traded higher. So let's see how the week play out basically. Let's go. Now, some of you going to ask me, can I enter at this 1 hour bullish fair value gap? You can enter, okay, nothing wrong with that. Okay, जैसे week open हुआ, यहाँ पे 1 hour fair value gap open हुआ, you can enter, okay. But you can see price was so consolidating, okay. You can enter, of course, I'll not say क्योंकि हम लोग ये 1 hour fair value gap था जो inverted fair value gap भी हम लोग बन चुका है, right? ये bearish fair value gap is not respecting and हम लोग का external कहाँ है? ऊपर है यहाँ, right? And personally, I have not entered any trade this day basically क्योंकि CPI के कारण I was avoiding uh, trade on USD pairs. Okay, so till Wednesday I have not taken any trade. Okay, but of course there was a setup. Even if you see 4 hour time frame, okay, 4 hour time frame, you can see market very nicely pushed higher and higher and grabbed this external range liquidity. Okay, so you can see on 4 hour also we created this inverted fair value gap, right? Sorry. So this candle closed above this fair value gap, bearish fair value gap. So that's showing कि 4 hour जो bearish signature था, it's converting to bullish basically, right? And हम लोग का higher time frame narrative क्या था? Daily to internal to external, right? So if you see 1 hour, of course you will see some of the entry. So here you can see we had this H1 fair value gap entry, right? अगर आप ये नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप का वेट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यू हैव मिस्ड द ट्रेड for the swing. Okay, right now I'm again talking only for the swing. So you can see we had this what breakaway gap, right? So where's breakaway gap? Yeah. So this was your entry on for the swing. The higher time frame क्या था? Daily internal to external, right? Here we created 1 hour inverted fair value gap, a 4 hour inverted fair value gap, right? So that's showing the bearish level is not holding and we're shifting bullish. Here what we created, bullish fair value gap, right?
So this can be your entry. Now some of you will say ki why not to take trade in this fair value gap, because this was the breakaway gap, right? And I already discussed this in classes basically. So let's say if you have entered at this fair value gap, still you will put your stop loss below this fair value gap low. Okay, so let's say you putting your stop loss below this low or below the body. Okay, so let's say your stop loss was here, and let's say simply you targeting 1:2 risk reward. Okay, so 1:2 somewhere here, it's coming just around external range liquidity, and you can see how beautifully it played out. Personally, of course, I missed because I was waiting for the CPI to release on Wednesday. Then I was interested taking trade, but of course the setup was there, clean trade. Okay, daily internal to external. Of course, I missed this one. Okay, and this what I journal. Okay, we have this higher time frame level, daily internal to external. We have created inverted fair value gap. After inverted fair value gap, we displaced higher. We created fair value gap with a breakaway gap, and the setup between internal to external was 1:2 risk reward. So there was a setup, of course. So this is what I will journal on my basically notion template or जहाँ भी आप journal करते हो, okay, or in diary, whatever you want to journal. Okay, so there was a setup before CPI news, of course. Okay, and this was a clean setup for uh, swing 1:2 risk reward, right? This is what I missed. So let's pass this right now. Okay, let me delete this. So you can see here we have created another fair value gap. You can see another bullish fair value gap we created here, right? So we have this bullish fair value gap. So let's create. So here we had the CPI on Wednesday. Okay, is the USD का CPI था. So we created this daily bullish fair value gap. So this is what I said also, I guess. And we have this basically bodies overlapping. Of course, this swing high is not overlapping with the fair value gap, but body is overlapping. And what this is basically large down close candle is our high probability order block, right? This is high probability order block. Why? Because we have this last four down close candle that tapped this fair value gap, and then this candle closed above this down close candle. So we have order block, high priority order block area plus fair value gap. So higher time frame set है यहाँ पे internal to external. Okay, of course we have grabbed this external old swing high. तो आप यहाँ से external to internal भी ट्रेड कर सकते हो, राइट? इफ यू वांट टू ट्रेड. ओके, एक्सटर्नल स्विप हो चुका है, तो एक्सटर्नल से आप ये इंटरनल भी टारगेट कर सकते हो. ओके, बट एज आई सेड, आई मोस्ट ऑफ द टाइम आई वेट फॉर इंटरनल to this external. Okay, so let's say we have created this new swing high, for example. Now let's say market, for example, open here and traded down first and tap this daily bullish fair value gap. First tap internal, then we can target this external range liquidity as a target, right? So let's see. So next candle, basically we tapped, you can see we also tapped the very little order block as well. Okay, either you can take, if you want to take trade on daily time frame, you can. Let's, you have put your limit on the order block. Okay, or the 50% of this daily fair value gap, for example. You put your stop loss below either swing low or below the body low. Okay, this is what you have to basically backtest, and let's say you targeting simply 1:2 risk reward here. Okay, so this can be your daily time frame entry as well, because higher time frame is bullish. You can see daily order flow is bullish. We have created high priority order block that's overlapping with fair value gap. So internal external is clean. Okay, so you can enter on daily, of course. Okay, but let's say you and let's say now let's go to from daily to first 4 hour time frame, then we will go to 1 hour time frame as well. So for on 4 hour time frame, I can see we have this inverted fair value gap. Okay, on 4 hour, and let's see 1 hour time frame as well. So 1 hour time frame में basically ये जो कैंडल था, जो ये कैंडल ड्रॉप हुआ था, दिस वाज बेसिकली ड्यूरिंग न्यूज. ओके, कुछ यूएसडी का न्यूज था, उसमें मार्केट ड्रॉप हुआ था वेरी स्ट्रांगली डाउन साइड, एंड you can see we created this big inverted fair value gap here. Okay, big inverted, sorry, big bearish fair value gap on 1 hour time frame. Okay, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ with my experience, with my data. So let's me do the replay quickly. Okay, and let's delete this one. So अभी हम लोग let's say ये daily fair value gap जो है हम लोग टैप नहीं किए, market was somewhere here. Okay, and let's say during news market
started moving lower, 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 very strongly downside. Okay, so this was nothing, just a manipulation. This is just a this is just a manipulation towards our higher time frame key level. Okay, now we hit key level. Okay, so this is just a manipulation. Okay, so ये जो sorry, let me pause this. So ये जो बिग बेरिश फेयर वैल्यू गैप हम लोग फॉर्म किए हैं, so इससे मेरे को ज़्यादा फेयरफुल नहीं है. ओके, कि दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ का मैनिपुलेशन था टुवर्ड्स आवर की लेवल. ओके, सो आई नो कि ये न्यूज़ का मूव है. It was manipulation, and we tap this internal daily. So I can look for internal to external. Okay, from this daily fair value gap to this external. Okay, personally I entered on GPUSD as compared to EURUSD, but there was a setup here as well. Okay, we tap this level, daily level. Okay, order block or fair value gap. Of course we didn't tap the opening of the order block, but you can see this week, at least almost it failed. Okay, if you go to maybe different broker feed, okay, different broker, you will see keys on some of, maybe we have tapped this order block as well. Okay, but let's talk about entry. So daily time frame पे हम लोग डेली इंटरनल टू एक्सटर्नल देख रहे हैं, राइट? सो लेट्स पुट दिस हियर ताकि दिखे, right? And here you can see we displace upside what we created here. We created H1 bullish fair value gap here, right? H1 bullish fair value gap. Of course, you can see we spent it so much time here, right? We spent it so much time at this fair value gap. And if you guys remember, two impulse play, basically, I said कि if sometime it happens कि we don't feel comfortable taking trade on this first impulse. Okay, जो ये first impulse मूव हुआ है, बेसिकली ये जो फर्स्ट impulse है, कभी कभी कंफर्टेबल नहीं रहते क्योंकि काफी बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, राइट? बट you don't have to be fearful from this fair value gap, where is fair value gap, क्योंकि न्यूज का मैनिपुलेशन था बेसिकली. ओके, so you can wait for the order block formation. Okay, you can see we have this last down close candle. Okay, why I'm taking this two down close candle and why I'm not taking this, basically because we had this one pause, and after this pause we traded much lower, right, below this low. Okay, so we have this order block for the entry. Okay, so this is our high priority order block because it formed inside fair value gap, and you can see this candle closing above this order block. And also order block के साथ क्या ओवरलैप कर रहा है? फेयर वैल्यू गैप, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे डेली टाइम फ्रेम में, राइट? जो हम लोग अभी यहाँ डिस्कस करते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ ओवरलैप कर रहा है फेयर वैल्यू गैप. सेम चीज यहाँ 1 आवर टाइम फ्रेम में, क्योंकि प्राइस इज फ्रैक्टल बेसिकली, सो it happens on same thing on daily 1 hour 4 hour. Okay, so this can be your entry basically. Okay, let's say you was not, लेट्स आप ये फेयर वैल्यू गैप, ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, इसको हम लोग ब्लू मार्क करते हैं फॉर एग्जांपल अभी, या ऑरेंज कर लेते हैं. जो ये 1 आवर बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किए फ्रॉम दिस डेली, और लेट्स यू वाज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट. ओके, क्योंकि काफी बड़ा बेरिश फेयर वैल्यू गैप है. ओके, so you can wait for the order block formation. So you can see we formed order block here, so here you can enter on this order block basically that's overlapping with fair value gap. Okay, and let's say for example you entered at this order block, okay, or fair value gap, you will put your stop loss below this last swing low. Okay, for example, and let's say you targeting simply 1 is to 2 risk reward. You can see it simply hit your 1 is to 2 risk reward. Okay, so two lesson I have given you. If you don't feel comfortable on the first impulse entry on the fair value gap, you can wait for the order block formation, right? High priority order block, right? Here we formed high priority order block that's overlapping with fair value gap. And make sure कि आपका higher time frame narrative clear है, क्योंकि हम लोग daily bullish fair value gap as an internal to क्या देख रहे हैं? External target, right? And of course it traded much higher. Okay, you can see it traded much higher. So अब hold भी किया हो तो definitely you have made good amount of money. Okay, but we don't have to be greedy, we have to just capture a part of that move. Okay, so this was your one trade basically. Okay, and of course I didn't took this one, I entered on GPUSD, but this is what I journal on my basically weekly recap. Okay, and this is what for you guys as well. Okay, so on GPUSD I said, I guess, on Discord group as well. So let's come to Discord quickly. So here you can see same thing here.
जो हम लोग थर्सडे फ्राइडे को यहाँ पे लेट्स कम टू जीपीयूएसडी, जो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किए थे हम लोग। और जीपीयूएसडी में सेम चीज, वही यूरोएसडी में भी उसी दिन हम लोग फॉर्म किए थे, ठीक है। सो इफ यू गो एंड चेक योर डेटा, so let's come here. Here I also shared with you guys I'm looking for market from this daily fair value gap to this either external range liquidity, or we had this weekly CB, so we can target that as well. Okay, here you can see, so we tapped this daily fair value gap, we displaced higher from this daily fair value gap. You can see external range liquidity was still untapped. Okay, और जो zoom call मैंने लिया था last week basically, you can go and check this out, check this video. उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि let's say यहाँ पे external was untapped here, right? And we created 1 hour fair value gap here. You can enter in this fair value gap. You can put your stop loss either below all the way swing low, or क्योंकि काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा उससे, तो यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस बिलो द बॉडी लो, ओके। एंड दिस कैन बी योर एंट्री, ऑफ कोर्स। लेट्स यू हैव मिस द ट्रेड, यू डिडंट फील कॉन्फिडेंट टेकिंग ट्रेड हियर, क्योंकि काफी करीब थे हम लोग एक्सटर्नल के, बट स्टिल द मार्केट हैज गिवन अ वेरी गुड मूव, ओके। एंड लेट्स सी इवन इफ यू हैव एंटर्ड हियर, यू कैन टारगेट दिस वीकली फेयर वैल्यू गैप, वीकली बेरिश फेयर वैल्यू गैप, एंड यू कैन मेक मनी, ओके। डोंट थिंक कि अगर लेट्स से एक्सटर्नल के ऊपर कुछ टारगेट नहीं रहता तब आई ऑल्सो अवॉइडेड दिस सेटअप, ओके। पर डेली एक्सटर्नल के ऊपर हम लोग का ये वीकली सीवी था, जो कि मैंने मतलब शेयर भी किया था कि वी हैड दिस वीकली fair value gap, various fair value gap that we can target. So we had some enough range to capture basically, okay. Or even if you go to weekly time frame, from weekly this internal you can target that external, okay. So you had very big range, okay. So you can capitalize the move basically, okay. So let's say you entered here because we have created this equal high, and you can target this weekly. It will easily give you 1 to 1.5 around easily, and you can hold your rest of your position till 2 hour, okay. So this was the setup I personally entered. Now again I'll say maybe you have failed कि यार कुछ mistake या कुछ fear के कारण आपने trade नहीं लिया होगा, that's why this is for you, Devon Finder, okay. And I hope this video will help you uh, to understand trade, basically how to take trade, even swing. And you have to understand every week one good quality setup forms, okay. And don't basically ऐसा मत करो कि यार आप ट्रेड ही मत लो, क्योंकि वीक में एक दो अच्छा सेटअप फॉर्म होता है, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किया, डेली था, इंटरनल एक्सटर्नल था, 1 आवर इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ हम लोग के डायरेक्शन में, फिर ट्रेड ले रहे हैं। सो ट्राई टू एग्जीक्यूट, ओके। लेट्स से यू रिस्क 0.5% फॉर एग्जांपल, जस्ट रिस्क 0.10% ना, ठीक है। मे बी आप अभी उतना कंफर्टेबल नहीं हो रिस्क डालने के लिए, तो जस्ट रिस्क स्मॉल, ओके। $10 ही का ट्रेड लो, लेकिन लो, ओके। लेट्स से 1% आपका अकाउंट का लेट्स से $100 है, सब $20 ही का ट्रेड लो, क्या दिक्कत है। आओ अभी प्रैक्टिस करो, अपने आप को बेसिकली ट्रेन कर रहे हो, राइट। सो आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड लेट मी नो इफ यू गाइस नीड एनी हेल्प, सो आई कैन हेल्प यू। सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वीडियो।